हाँ बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल। बेटा आवाज सुनाई दे रहा है? Am I audible to you? हाँ सर, गुड इवनिंग। ओके बेटा, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। सो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंगली। सो आई थिंक बेटा, व्हाट इज द लास्ट प्रॉपर्टी? What I told in the last lecture? So but I today discuss property number 4. Okay. Property number 4. So property number 4 is that key fractional part of x, fractional part of x plus fractional part of minus x, fractional part of x plus fractional part of minus x, this is equal to 0 when x belonging to integer, and this will be equal to 1 when x does not belongs to integer. Okay, when x does not belongs to integer. Okay, so basically beta, suppose x belongs to integer, we can simply say that sir, x is equal to n. Got it now? So from here, fractional part of x is equal to fractional part of n, and the fractional part of integer will be also 0. We can say that from here ki fractional part of, we can also say that is the fractional part of minus x. Guys, I think this is clear to all. And we can also say that ki sir, fractional part of minus x, when we multiply with minus, this is fractional part of minus n, and fractional part of integer is minus integer is always 0. Just to add them, just to adding them. So when you add them, beta, you can simply beta ki fractional part of x plus fractional part of minus x is what? That is equal to 0. That is equal to 0. I think beta, this is clear now. Got it beta? The fractional part of x, just to add them both the equations, again you get minus fractional part of x plus fractional part of minus x is equal to 0. Suppose guys, suppose x does not belongs to integer, what we can do? To do variable ki sir, let x should lies between
x should lies between n to n plus 1. So guys, you know very well, sir, x is also written as greatest integer function of x plus fractional part function of x. So x is also equals to n plus fractional part of x. So from here, fractional part of x is equal to what? X minus n. Okay. Okay now. Got it or not? From here. Yes, sir. Yes, beta. Sir, I got it, sir. Okay. From here, we just multiplied with minus. Okay. So when you multiply with minus, beta, the sign of inequality will change. The sign of inequality will change. When you multiply with minus, sign of inequality will beta change. Okay. I think this is clear to all. You can also use greater than equals to a greater than, no problem. Okay. Guys, suppose we have just minus x. So minus x is written as greatest integer of minus x plus fractional part of minus x. I think this is clear to all. Okay. So minus x is equal to, and the greatest integer of minus x will be what? What beta? Minus n plus 1. I think that clear now. Minus n plus 1, because it just approaches the beta this value, and this is beta minus x. Fractional part of minus x is equal to n plus 1 minus x. Okay, just to adding both these conditions, just to adding both these conditions, just to adding them. What you get finally, beta, we are just finally here, I'm just writing here, adding them. Then fractional part of x plus fractional part of minus x is equal to 1. That is your desired result. I just already put. This is the basic condition we have to prove here, beta. From here we can say that the fractional part of x plus fractional part of minus x is equal to 1. Okay, so that is your answer. Okay, beta, just note it down, beta. Just note it down. But any doubt, let me know. विष्णु, अदिति, बेटा कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलो, तो गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़ा सा देख लो एक बार। सबसे तो पहला पॉइंट है ना बेटा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स should lies between 0 to 1. That is first point. और दूसरा बेटा
fractional part of x is a periodic function, is a periodic function, and their fundamental period that is capital T is equal to 1, is equal to 1. बेटा इसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो क्या बेटा 1 है. इसका जो फंडामेंटल पीरियड है बेटा वो क्या बेटा 1 है. फंडामेंटल पीरियड बेटा क्या है 1 है. So this is the important thing that we have to remember here. Okay. Okay बेटा. Just take one question. Question is that 3 into fractional part of x का whole square minus 10 times of fractional part of x plus 3 is equal to 0, where this represent fractional part function. So this is a very easy question. Try to solve, guys. एक बार try करो solve करने का बेटा. Done बेटा. बेटा आंसर आया क्या?
देखो बेटा कैसे करेंगे सॉल्व। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, क्या तुम लोग फंस जाते हो 2 मिनट में। अरे देखो, देखो बेटा सवाल को देखो। देखो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, लेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को y मान लो। तो क्या बनेगा बेटा, 3y² माइनस 10 टाइम्स ऑफ y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो, क्या हो जाएगा, 3y-1 इंटू y-3 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या मिलेगा तुमको, 3y-1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, और y-3 इज इक्वल टू 0, 3. y इज इक्वल टू 3। अब बेटा y क्या है, y तो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, दिस इज इक्वल्स टू 1/3, और fractional part of x is equals to 3. So beta we have two values. Okay, we have two values. Fractional part of x is equals to 1/3 and the fractional part of x is equals to 3. But guys, do you know very well that fractional part of x always give the beta fractional value. So your answer, this is rejected, this is correct answer, but this is beta integral value. But this answer is rejected, this is beta rejected, this is beta rejected, because fractional part of x never give the integral value, it's always give the fractional value. Okay, okay guys, so basically beta, and do you know very good fractional part of x is a it is a periodic function. I think you guys also know the fractional part of x is a periodic function and their fundamental period is 1. Got it now? So x is equals to 1, x is equals to beta 1/3 is your answer. And we can also say sir 1 plus 1/3, general answer 2 plus 1/3, because that is a periodic function. Anything minus 1 plus 1/3, any integer. Dot, 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 dot. Okay, so what is the general solution? General solution is that x is equals to n plus 1/3, where n belongs to integer, n belongs to integer, n belongs to integer. So this is your answer of this question. That is very interesting question guys. ये आपका बेटा आंसर होगा, है ना? I think that's clear. Okay बेटा, just take one more question. Guys, one more question from JEE advanced section and try to solve. Find range of the function. Beta, domain and range I will discuss end of the function. Okay, function के last में बेटा हम आपको domain range पढ़ाएंगे. Find range of the function. Function fx is equal to fractional part of x plus 1 plus fractional part of x, where this represent fractional part function. This represent fractional part function.
करो बेटा जल्दी से, अरे थोड़ा सा आइडियोलॉजी डेवलप करो। अच्छा क्वेश्चन मैंने दिया है आपको। देखो रेंज को अपन क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या किया मैंने, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, अब यहां से क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या बन जाएगा, y प्लस y इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x is equal to fractional part of x. From here, just take the fractional part of x common. You can simply get 1 minus y is equal to y. From here, fractional part of x is equals to y upon 1 minus y. Y upon 1 minus y. Okay. And guys, do you know very well that fractional part of x should lies between 0 to 1. So guys, y upon 1 minus y should also lies between 0 to 1. So means what? Actually, inequality तुमको बेटा आता है सॉल्व करें, inequality यहां से बेटा क्या बनेगा, y upon 1 minus y greater than equals to 0, बीच में बेटा आ जाएगा and का बेटा मतलब इंटरसेक्शन y upon 1 minus y लेस देन 1। ठीक है, अब तुम इसको सॉल्व करो बेटा, अब इसको सॉल्व करो। अब यहां से बेटा क्या आया आपका, आया बेटा y upon 1 minus y greater than equals to 0, बीच में बेटा आ गया and, बीच में क्या है बेटा and y upon 1 minus y less than 0. अब जस्ट टेक द बेटा साइन स्कीम, वेवी कर्व मेथड, दिस इज व्हाट। अरे बेटा सबको पता है ना इनक्वालिटी सॉल्व करना, आता है क्या तुमको, आता है बेटा, क्या नाम है विष्णु, इनक्वालिटी सॉल्व करने आता है ना? यस सर, यस सर। तो बेटा अब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब, ओ माय गॉड, y अपन 1 minus y ना, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे माइनस होगा ना, माइनस प्लस माइनस, तो बेटा इसका इनक्वालिटी क्या होगा बेटा, ये बेटा यहाँ पे तो माइनस होगा, हाँ ये तो माइनस होगा बेटा क्योंकि प्लस माइनस, तो हाँ माइनस। ओके, सो बेटा इनक्वालिटीज फ्रॉम दिस इज इंक्लूडेड एंड दिस इज एक्सक्लूडेड, बिकॉज 1 को बेटा रखेगा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, बीच में बेटा है एंड, अब ये बेटा होगा लेस देन 1, ये तो होगा बेटा लेस देन 1 है ना, देखो यहाँ से ना लेस देन 1 होगा बेटा, ठीक है ना। थोड़ा सा बेटा बेसिक है, इनक्वालिटी तुमको क्लास 9 में पढ़ा होगा तुमने। तो y अपॉन 1 minus y माइनस 1 लेस देन 0, यहां से बेटा क्या बन जाएगा, 1 minus y इसका एलसीएम होगा बेटा, तो क्या हो जाएगा 2y minus 1 अपॉन 1 minus y लेस देन 0, तो इसका बेटा ले लो, इसका बेटा रूट्स क्या होगा, इसका बेटा एक रूट्स होगा 1/2, देखोगा बेटा 1, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, इसने बोला लेस देन, मतलब लेस देन मतलब क्या, आउटसाइड द रूट्स, this I'm taking the intersection of these two conditions, taking intersection, तो एक नंबर लाइन बनाओ बड़ा सा। अब इस नंबर लाइन में बेटा क्या होगा, सबको प्लेस करो,
प्लेस करो बेटा। पहले तो बेटा आएगा सबसे छोटा तो जीरो है, तो जीरो डालो, फिर कौन डालेगा 1/2 डालोगे, फिर क्या डालेगा, फिर 1 डालेगा। पहले वाला सोल्यूशन से बेटा बोला 0 से लेके 1, 0 इंक्लूडेड, 0 से लेके 1, 1 एक्सक्लूडेड। और दूसरा बेटा माइनस इन्फिनाइट से लेके -1/2, मतलब माइनस इन्फिनाइट से लेके -1/2, 1 से लेके बेटा इन्फिनाइट। इसमें बेटा कॉमन रीजन कौन सा है बेटा, देखो यही तो रीजन कॉमन है ना, दिस रीजन इज बेटा कॉमन, दिस इज कॉमन रीजन, ओके, दिस रीजन विल बी कॉमन बेटा। तो योर आंसर इज y बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0 से लेके बेटा 1/2, और 1/2 इज बेटा ओपन, 1/2 इज ओपन। दिस इज द बेटा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द बेटा जेईई एडवांस प्रॉब्लम, ओके, दिस इज योर बेटा आंसर। तो बेटा इसमें कुछ नहीं था, बस क्लास 11th के कैलकुलेशंस का यूज था। मेन बेटा इसमें जो रोल था वो इनक्वालिटी का था, इनक्वालिटी। आपको बेटा इनक्वालिटी आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं रही सवाल के अंदर, मेन बेटा गेम था इनक्वालिटी को। बेटा एनी डाउट, लेट मी कंफर्म बेटा, कोई तुम्हें डाउट हो तो बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है जेईई एडवांस। चलो, one of the interesting question that we have to discuss. So basically beta your topic is finished today, okay, so we have to just move forward accordingly, okay beta. So some important observation, today we'll discuss some important observation. बेटा सबसे पहला प्रॉपर्टीज देखो, सबसे तो पहला प्रॉपर्टीज तुमको पता होगा बेटा क्या है, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x should lies between x -1 to ऐसा। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0 टू लेके बेटा ओपन 1, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 3, greatest integer function of integer is always integer, okay. Fourth, fractional part function of integer is always 0. Any doubt? Any doubt? Fifth, greatest integer of x और उसका greatest integer क्या होगा बेटा? बेटा सिंपली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ही होगा, क्लियर है बेटा। 6 नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो हमेशा क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा 0 होगा, क्लियर है बेटा। 7 नंबर देखो,
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा बेटा, सिंपली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होगा। 8 नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और उसका फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर का बेटा फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। और 9 नंबर बेटा, एक्स प्लस इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस इंटीजर। ओके, 10 नंबर, एक्स प्लस इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट, तो हमेशा बेटा क्या होगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होगा। गॉट इट। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट, इंटीजर इनटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, इज नॉट इक्वल्स टू आई इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। जस्ट रेफर टू लास्ट लेक्चर नोट्स बेटा, लास्ट लेक्चर नोट्स को रेफर करो। क्लियर है, क्लियर है बेटा। जैसे फिर 12 नंबर देखो, इंटीजर इनटू एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नहीं होगा। ठीक है ना, क्यों नहीं होगा बेटा, या तुम इसको कभी भी ऐसे भी ना कि इंटीजर इनटू एक्स को कभी भी आप इंटीजर को बाहर निकाल लो और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को बाहर ऐसे लिख दो, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको एक एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन देखो इस तीनों के लिए, एक ऑब्जर्वेशन देखो। लेट सपोज बेटा मान लो x इज इक्वल्स टू 1/2। एक एग्जांपल देखो बेटा इसके लिए, इस सब के लिए। अब मान लो कि मैंने x बराबर 1/2 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर क्या होगा, और मैंने इंटीजर ले लिया 2, इंटीजर ले लिया बेटा 2। LHS क्या होगा बेटा, LHS बेटा क्या हो जाएगा, LHS तो 1 हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना, अरे हो जाएगा ना। लेकिन RHS क्या होगा बेटा, RHS तो 0 हो जाएगा, RHS तो 0 हो जाएगा बेटा। तो आई थिंक दिस इज क्लियर ना। अरे बोलो रे बाबा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 14 नंबर प्रॉपर्टी है बेटा कि x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y नहीं होता है। और एक इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है बेटा 15 नंबर कि x प्लस वाई का फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y नहीं होता है। अब जैसे एग्जांपल देखो, इसका भी एग्जांपल देखो। तुमने मानो कि x बराबर ले लिया 0.8 ले लिया, और मैंने y ले लिया बेटा 0.2, तो LHS क्या हो गया, LHS हो गया बेटा 1, RHS क्या हो गया, RHS हो गया बेटा 0। क्लियर हो गया बेटा, बोलो बॉस, दिस इज क्लियर ना। Yes, sir, clear. ओके, चलो देखो आगे चले। ओके चलो, प्रॉपर्टी नंबर 16 देखो। अब एक चीज और देखो, एक्स प्लस वाई का ग्रेटेस्ट, आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा भी चुका था कि एक बार फिर से मैं बताता हूँ। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो तो बेटा ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई
और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अरे बात तो सेम ही है, अरे है ना, अरे है ना। अब यहां से एक काम करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y को मैंने निकाल लिया, तो यहां से क्या बचेगा बेटा, यहां से बचेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, अब तुमको बेटा पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से लेकर 1 के बीच में आता है। अब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y भी है, तो बेटा ये जो वैल्यू आएगा बेटा ये 0 से लेकर 2 के बीच में आएगा। अरे 0 से लेकर 1 इसका और 0 से लेकर 1 इसका, दोनों को ऐड कर दो 0 से लेकर 2 के बीच में आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, और उसका मैंने ले लिया बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा बेटा फाइनली, ये फाइनली बेटा वैल्यू बन जाएगा आपका 0 के बराबर। अरे बन जाएगा, अरे 0 बनेगा और या तो 1 बनेगा, अरे यही बनेगा ना, 0 बनेगा या तो ये 1 बनेगा। अरे क्लियर है, अरे 0 बनेगा या तो 1 बनेगा। तो यहां से x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y if fractional x plus fractional y should lies between 0 to 1। ठीक है, और एक वैल्यू बेटा आपको और मिलेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 1। अरे दो केस मिलेगा ना, एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 0, कब, जब x और y फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y 0 से लेकर 1 के बीच में। और एक बेटा वैल्यू मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 1 if fractional part of x plus fractional part of y should lies between, कहां से बेटा, 1 से लेके 2, 1 से लेके 2। तो बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, लेकिन बेटा इसको बेटा ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। I already discussed by the another method in the last lecture, in the lecture of greatest integer function. I already discussed it. So any doubt, let me know, guys. बेटा क्लियर है ना? सेवेंटीन नंबर, greatest integer of x plus greatest integer of minus x is equal to -1 when x does not belongs to integer. Already discussed the last lecture, and that is equal to 0 when x belongs to integer. बेटा इस प्रॉपर्टी को भी आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है ना बेटा। अच्छा बेटा विष्णु, मधुसूदन, ऐसे समझ में आया? अदिति, दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर ना, 16 वाला? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt? शमिता, शमिता, Yes, sir. ये क्लियर है? Yes, sir. चलो आगे चलो। ना नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, आई थिंक मैं सबको एक साथ लिख दिया हूं बेटा ताकि आपको दिक्कत ना हो। अपना प्रॉपर्टी है बेटा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x इज इक्वल टू 0 जब क्या x इंटीजर हो और 1 कब, जब x इंटीजर ना हो, है ना। और बेटा लास्ट एक प्रॉपर्टी याद रखना कि कभी भी जब बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटीजर हो जाए, तो आपको मैंने बेटा पहले भी पढ़ाया था क्या कि x बिलोंग्स टू, कहां से बेटा, i टू i प्लस 1। बेटा मैंने पहले भी पढ़ाया था, आपको याद होगा।
टेक प्रॉपर्टी मैंने और भी पढ़ाया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जब भी इंटीजर से बड़ा या बराबर हो तो दिस बेटा ऑलवेज एक्स बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर टू इनफिनाइट. बेटा I already discussed the last lecture in the topic of greatest integer function. Just refer the beta lecture notes. Less than equal to बेटा तो क्या हो जाएगा बेटा, x belongs to minus infinite to बेटा I plus 1. Okay. Okay बेटा. Any doubt, let me know. No doubts, sir. Okay. Note it all बेटा. Okay, just come on example. बेटा 13.2 का तो क्या होगा बेटा इसका आंसर? सिंपल है बेटा, 13.2 का GF प्लस माइनस 13.2 का GF. 13.2 का GF बेटा क्या होगा 13, माइनस 13 पॉइंट का बेटा माइनस 14. आंसर विल बी बेटा -1. वेरी बेसिक क्वेश्चन. ओके. $6.78 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस -6.78 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वेयर दिस रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. बेटा इसका 6.78 प्लस -6.78, बेटा इसका ग्रेटेस्ट 6 और इसका बेटा -7, बेटा -1. 3 greatest integer of 5 greatest integer of 5 plus greatest integer of -5, where this represent greatest integer function. So simply बेटा greatest integer of 5 plus greatest integer of -5, तो 5 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 और -5 का -5 मिलके बन गया बेटा 0, है ना. तो ये तो सिंपल था बेटा. कुछ तुमको क्वेश्चंस देता हूँ, सॉल्व करना बेटा. क्वेश्चन फिर से सॉल्व. फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे कंडीशन है दिस से बेटा रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट, this shape represent integer function. क्वेश्चन नंबर बेटा 1 देखो, 1 दिया है.
The greatest integer of x is equal to 3. Question number 2 is that greatest integer of x is equal to -5. बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.7. ओके ओके बेटा, Yes. फोर्थ Yes. बोल रहा है बेटा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3.88. फिफ्थ बोल रहा है greatest integer of x greater than equals to 7. Sixth number, greatest integer of x greater than equals to -9. 7 number, greatest integer of x greater than 3. 8 number, greatest integer of x greater than equals to 7.8. 9 number, greatest integer of x less than equal to 5.4. 10 number, greatest integer of x less than -7. 11 number, और दे दो क्या बेटा, कम तो नहीं है ना, चलो यार 10 दे दिया, 10 करो, 10 करो बेटा, जल्दी से करो बेटा, फटाक से। आ गया बेटा आंसर? बेटा हो गया बेटा, जल्दी से करो रे बच्चा।
आगे बेटा आंसर जल्दी बताओ। अदिति, विष्णु, शमिता, रितु, आंसर आया? सर लास्ट 3 बचे हैं बस। तुम्हारा क्या हुआ रितु? 7th वाला कर रहा हूँ। विष्णु, तुम्हारा क्या हुआ? यस सर, कर रहा हूँ। एक काम करो बेटा, अब तो टाइम भी हो गया ना, एक काम करो, आप लोग तो घर से करके आओ तो, है ना बेटा? होमवर्क में कर दो या डिस्कस कर दो? ले लो, होमवर्क कर लो। तो बेटा टॉपिक कंप्लीटेड हो गया बेटा। कल बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ग्राफ्स। इतना बेटा करके आओ आप लोग, है ना? थैंक यू ऑल बेटा। चलो कल मिलते हैं बेटा फिर, है ना? चलो बेटा, ओके बाय। थैंक यू सर।